सर आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से आए हैं यहाँ वर्कशॉप के लिए? Yeah, so I'm Dr.Parth Shah. I'm from Surat, Gujarat, and I'm a pediatric dentist. ओके, सो क्या आपने सोचा कि जयपुर में ये इम्प्लांट वर्कशॉप में अटेंड करनी चाहिए? क्या आपके माइंड में सेट था ये? बस इम्प्लांट के बारे में जानना था, सीखना था, कभी किया नहीं है. So बेसिक कोर्स में एटलीस्ट पहले जाने क्या है और सो वी कैन स्टार्ट. ओके, सो ये 2 दिन में आपने क्या लर्न किया है? मतलब यहाँ से क्या आपका कॉन्फिडेंस है, क्या रिव्यूज़ हैं आपके? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. मुझे इम्प्लांट के बारे में कुछ भी नहीं पता था. और बट अभी येस, आफ्टर अटेंडिंग 2 days ऑफ कोर्स एटलीस्ट आई नो, एटलीस्ट आई कैन स्टार्ट प्लेसिंग अ सिंगल टूथ इम्प्लांट विच कैन बिल्ड माई कॉन्फिडेंस, and in future I can further step ahead in implantology. मेंटर सपोर्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? Oh, Dr. Gaurav Gupta and D.K. Gupta sir, best and amazing mentors. Nothing else to say. What about for documentation and live demonstration and cases, surgeries? Yes, so Other things. documentation was very nicely done with sequence of steps. और जो भी हमने यहाँ पे लाइव पेशेंट्स देखे उसमें भी हमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझा है. एंड एटलीस्ट थियरी में जस्ट सुनते हैं कि भाई इसके बाद ऐसा किया, बट जब आप लाइव देखते हो तो वो इम्प्रेशन तुरंत ही आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं कैप्चर हो जाती है. सो वी होप कि 2 दिन में आप इतना कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे जब भी आप 3rd डे अपने होम टाउन, तो एटलीस्ट आप इम्प्लांट प्रैक्टिस. या दैट्स व्हाट आई सेड कि एटलीस्ट इतना सीखने के बाद इतना कॉन्फिडेंस तो आया है कि एटलीस्ट सिंगल टूथ मिसिंग है, वहाँ से तो आप स्टार्ट करो. डोंट थिंक ऑफ फुल माउथ रिहेबिलिटेशन, एटलीस्ट सिंगल टूथ इम्प्लांट से तो आप स्टार्ट कर सकते हो. व्हाट अबाउट हॉस्पिटैलिटी एंड yes food and others? So very well arranged and बहुत ही बढ़िया तरीके से हॉस्पिटैलिटी लाइक भी हुई. So very much happy, no complaints. Thank you. So end of the day, what you will give us any positivity for next? Sometimes I feel the words are not enough to express your happiness or to express your gratitude. But if you are asking me from the like 5-star में से आप मुझे कितना दोगे या 10 out of 1 to 10 रेटिंग में आप कितना दोगे? So 10 के बियॉन्ड ही दूंगा. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. यस, सो दैट्स गुड, अमेजिंग, बेस्ट. कुछ आपको ऐड करवाना हो फ्यूचर में कि हम कुछ लैग कर रहे हो, मतलब कंटेंट के बारे में मैं थोड़ा आपसे पूछ रहा हूँ कि 2 दिन में कोशिश की है जितना रिच कंटेंट हम दे सकें. इवन प्रोस्थेटिक फेज हमने आपसे देखा कि हमने कवर करने की कोशिश की है. प्लान डालना इट्स नॉट अ बिग डील, बट जब बात आती है प्रोस्थेटिक सेकंड स्टेज ऑफ सर्जरी की, वहाँ पर कहीं ना कहीं हम एक हेजिटेशन क्रिएट करते हैं. नहीं, बट द सेकंड डे लाइक टुडे लास्ट डे वाज लाइक इट वाज वेरी गुड, जहाँ पे पूरा प्रोस्थेटिक कवरेज हुआ. लाइक इन द डेमो दे शोड अस अबाउट ओपन ट्रे टेक्निक, क्लोज ट्रे टेक्निक with like I don't have scanner, but they showed us how to take impression with scanner also, that in future if you buy a scanner you can use that technique also. So otherwise also like what different kind of abutments, how you can do your prosthetic rehabilitation. Right. So on the second day it was like prosthetic part was covered very well. Thank you. So क्या मैसेज आप देना चाहेंगे मेंटर्स को? Yeah, Dr. Gaurav Gupta and D.K. Gupta sir and Dr. Mittal sir, they 3 of them are really amazing mentors. Like few people have a good clinical skills but they don't know how to present themselves. Few people have that skills of presentation but they are not good at basics or academics. But Dr. Gaurav, Dr. D.K. Gupta sir and Dr. Sankalp Mittal sir, they are, you know, the mixture of basic knowledge, which is a foundation of anything. Over that they are academically very sound, and at the same time their clinical work is amazing and with full of confidence. So those 3, you know, it's an amalgamation of all those 3 things, right, which really makes you a good teacher. Yes.
बिकॉज यू आपको थियरी भी पता है और आपको उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी पता है और यू कैन प्रैक्टिकली भी आप अप्रोचेबल हो. सो ये तीन चीज़ जब मिलती है दैन इट्स ग्रेट और गुड टीचर. So we hope you are satisfied with Yeah, very much. 2 days all that. Yeah. And so next अगर हम लोग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं so we hope you will. या मैं आपको बोलने वाला था कि अभी इसमें भी कुछ एडवांस बिकॉज इम्प्लांटोलॉजिस्ट Yeah. कीप ऑन लर्निंग प्रोसेस. मैं आपको बोलने ही वाला था कि अब वही इन फ्यूचर अगर आप कुछ इम्प्लांट में एडवांस इम्प्लांटोलॉजी का कुछ वर्कशॉप कर रहे हो जिन्होंने बेसिकली आफ्टर मे बी 6 months आफ्टर 1 year. So I'm really looking forward to learn more about implantology from these 3 mentors. Thank you very much sir. Yeah.